वॉलंटियर काम कर रही हूँ। साथ ही हम वेलकम करेंगे हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मिस कमालिका जी का। सो मैम, अ ह्यूज वेलकम टू अवर शो। Thank you. Thank you so much. ग्रेट। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज हमारे साथ कई सारे न्यू व्यूवर्स भी जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि बातें उत्तराखंड की हर संडे 11 बजे लाइव होता है और इसमें हम हर बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो उस टॉपिक पे एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बैठते हैं और हमारी व्यूवर्स, हमारी ऑडियंस उस टॉपिक के बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। सो अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अमृता देवी फाउंडेशन क्या काम करती है, किस पर्पस के लिए काम करती है, उसे जानने के लिए आइए देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। उत्तराखंड वह भूमि है जहाँ पर शास्त्रों और वेदों की रचना की गई थी और महाकाव्य महाभारत लिखा गया था। प्रकृति ने अपार सौंदर्य से नवाजा है उत्तराखंड को, जहाँ एक तरफ हम पलायन जैसे विषयों पर खेत जताने के अलावा कुछ विशेष नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ आज भी महिलाएं पहाड़ों में शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं। ऐसे में एक संस्था है जो इन महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और साथ में पर्यावरण के संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी है और मैं अमृता देवी फाउंडेशन का फाउंडर और ट्रस्टी हूँ। मैं अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव घुघुती का रहने वाला हूँ। बहुत वर्षों पहले हमारा पूरा परिवार घुघुती गांव से दिल्ली की तरफ पलायन कर गया, बट मेरा जुड़ाव हमेशा अपनी मातृभूमि के साथ रहा। मैं कई बार अपनी मातृभूमि अल्मोड़ा में और गांव में विज़िट करता था और उस विज़िट के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे स्पेशली हमारी लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। इस तरह से शुरुआत हुई अमृता देवी फाउंडेशन की। अमृता देवी फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में पड़थोला, हरड़ा, घुघुती, मानीला, सिनार और भिकिया सेन गांव में हैं। इन सेंटर्स में महिलाओं को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई जैसे कोर्सेज में प्रशिक्षित किया जाता है और इसके साथ साथ इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बात किसी के समक्ष रख सकें। अमृता देवी फाउंडेशन अपने निरंतर प्रयास से अभी तक सैकड़ों से भी अधिक महिलाओं को शिक्षित कर चुकी है और उनमें से अधिकतर महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं और आज वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर पा रही हैं। मेरा नाम दीपाली है, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से हूँ और मैंने अमृता देवी फाउंडेशन से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम है मी पहाड़ी। तो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया अमृता देवी फाउंडेशन से, तो उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पता चला। मैंने उसमें एनरोल किया और मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, जिसके बाद कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अमृता देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत आसान होता है, पर उस दिशा में निरंतर कार्य करना मुश्किल। लेकिन अमृता देवी फाउंडेशन की टीम ने अपनी लगातार मेहनत से ये साबित किया है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो वे सफल होते हैं। अगर आप भी अमृता देवी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और समाज की बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे ईमेल के जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर अपनी कमाई का आप कुछ हिस्सा उत्तराखंड की महिलाओं की शिक्षा के लिए देना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। अमृता देवी फाउंडेशन में हम लड़कियों व महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पे निरंतर काम करते आ रहे हैं। इसी के साथ हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। ये प्रयास हमारी विंग अमृता देवी अर्थ केयर के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इस विंग में हम
वनीकरण पे काम करते हैं। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो फल और ईंधन लकड़ी का उत्पादन करते हैं। इन प्रयासों से कुछ स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ लगाने, उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। हमारी परियोजना के दूसरे चरण में ऊर्जा कुशल लकड़ी के चूल्हे ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चूल्हे न सिर्फ खाना पकाने का एक स्वस्थ विकल्प है, अपितु ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक उचित कदम है। तो आइए बढ़ाइए एक कदम उत्तराखंड के अच्छे भविष्य की ओर और बनिए हिस्सा अमृता देवी फाउंडेशन का। लेट्स बिल्ड उत्तराखंड टुगेदर। यस, लेट्स बिल्ड उत्तराखंड टुगेदर। अमृता देवी फाउंडेशन उत्तराखंड की लड़कियों और महिलाओं के लिए एक अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है। उन्हें इस काबिल बना रही है कि वो अपने पैरों में खड़े हो सकें और अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ-साथ अमृता देवी फाउंडेशन ने अपनी नई विंग अमृता देवी अर्थ केयर कुछ समय पहले ही ओपन की है, जिसमें वो एफॉरेस्टेशन और स्मोकलेस चूल्हा जैसे और कई सारे कामों को करके अर्थ केयर में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। सो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं मिस कमालिका जी, जो हमारी आज स्पेशल गेस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मिस कमालिका जी 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं एचआर प्रोफेशनल की तरह और एट प्रेजेंट वो एचआर हेड एंड एडमिन हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी हिजेंस इंडिया में। हम उनके बारे में और जानेंगे और डिटेल से जानेंगे और उसके लिए हमारी ऑडियंस और हम जानना चाहेंगे आपकी सेल्फ जर्नी के बारे में। सो प्लीज़ मैम गो अहेड टू टेल योर सेल्फ जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आई एम रियली, मेरे लिए आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है। इस संडे में सब जो जुड़े हुए उत्तराखंड से, एक्चुअली मैं हूँ इंडिया के असम से हूँ। मैं बहुत एक छोटी टाउन से हूँ मैं। यू नो उस टाउन पे प्रोबेबली जैसे आप लोग की प्रॉब्लम है, प्रोबेबली हमारे भी अगर मैं गाँव में जाऊँ, प्रोबेबली देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लिटरेसी रेट। एंड ऑफ कोर्स otherwise Assam is a place where women are being empowered. हमारे वहाँ पर कोई डाउरी सिस्टम नहीं है असम में। बट कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, एंड आज जो मैं दिल्ली में नोएडा में रहती हूँ, इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग जर्नी फॉर मी। व्हेन आई सी, जब मैं देखती हूँ कि गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड्स एम्पावरमेंट, तो प्रोबेबली मैं अपनी दिल से जुड़ी, मतलब आई रियली गेट connected with my heart, because I know, rather than reading or hearing, because I have felt that in my life how tough it is, coming from a small town, coming to a bigger city, studying over there, meeting people from different culture, from different state, then working for different companies. I have worked for companies which have been very male dominated, जिसमें लोगों को इतना confidence नहीं था whether a woman like me will be able to handle that role or not, and then successfully overcoming those roles, and then settling myself in a city like in capital region of the country was something very very interesting. So this is small introduction about me. मैं फिलहाल Hisense है. Hisense is a consumer electronics company जहाँ पे हम लोग TV, refrigerators, AC, white goods, वो सारी, it's those kind of things. We are a world-known manufacturer. We are a global leader in terms of TV. So मैं उस company में मैं अभी I'm working there as a director HR and admin over there. So this is a small introduction about me. And once again, thank you for the warm welcome. वाओ! व्हाट अ ग्रेट इंट्रो मैम। आपकी सेल्फ जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और रियली आसाम एक ऐसी प्लेस है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। आई रियली मतलब मैं चाहती भी हूँ कि कभी पर्सनली वहाँ जाया जाए और रियली अप्रिशिएट योर वर्क और किस चैलेंजेस को फेस आपने किया और उसके बाद आज आप इतनी अच्छी पोजीशन में हैं। तो आई होप हमारे साथ जो ऑडियंस में स्टूडेंट्स जॉइन किए होंगे और कई सारे लोग जो अभी एज एन कैरियर स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको आपसे एक नई होप मिलेगी कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सेल्फ जर्नी। सो हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है ह्यूमन रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो मैम, जैसे कि आज हमारे पास ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग
जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, जो कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए एक ओवरव्यू देना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन in human resources and in any workplaces. Yes, ma'am. Okay. Before that, what is human resource? What is diversity and inclusion? Let me start off because, girl child, because I was also, sometimes let me give a small story about myself, let me start with that. मैं छोटी सी I was like from my school days. I was good in my studies. मैं अच्छी marks आती थी एग्जाम्स में and स्कूल में सब लोग मुझे जानते थे because I believed in lot of I participated in lot of extracurricular activities and all this stuff. तो मुझे छोटे से ना एक जैसे होता है what is your aim in life, तो मैं हमेशा लिखती थी my aim in life is to become a doctor. और मैं हर अपनी जैसे रफ बुक्स होते हैं कहीं पे होते हैं, तो मैं हमेशा छोटे से व्हेन लाइक प्रोबेबली मैं जब क्लास थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं आई यूज्ड टू राइट माय नेम एज डॉक्टर कमालिका डेका, बिकॉज ये छोटे से मेरे ड्रीम थी डॉक्टर बनने की. देन जब मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया असम में, दैट पॉइंट इन टाइम असम में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, एंड इट वाज टफ बिकॉज मोर देन लाइक close to lakh of students appear for those entrants, and there are only 3 medical colleges are there. तो मैं ना कुछ एकदम फॉर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत माइन्यूट मेरा डिफरेंस था, एंड आई कुडंट एक्चुअली गेट एडमिशन टू एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस. उसके बाद मैंने सेकंड टाइम अपेयर किया, एंड सेकंड टाइम ऑल्सो इट वाज माय हार्ड लक, प्रोबेबली वेरी फ्यू मार्क्स, कुछ 5-6 मार्क्स के लिए मुझे कोई मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला. And then I was like, totally devastated in my life, that क्या होगा, बिकॉज छोटे से मैं ही यही, मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगी, आई कैन सर्व द सोसाइटी, आई कैन सर्व द पीपल. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ओवरकम विद दैट. मेरे लाइक ऐसा होता है कि लाइफ खत्म हो गया है, अभी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन आफ्टर दैट, मेरा लाइफ ही खत्म हो गया. सो देन हमारी जो राष्ट्रपति थे भारत की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. सो एपीजे अब्दुल कलाम, देयर वाज अ फेस्टिवल असम में, एक दिहिंग पाट का, इट वाज नोन एज अमेजोन फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट बोलते हैं उसको. तो वहां पर डॉक्टर वाज अ फेस्टिवल, एंड डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल कलाम वेंट देयर एज अ चीफ गेस्ट. सो जब भी डॉक्टर अब्दुल कलाम यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस ना, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे 30 मिनट स्लॉट चाहिए with the children's, because he wanted to interact with the children's. So being that festival was in my own district, so मुझे एक मौका मिला between those 30 students की उनके साथ interact करने के लिए. And I still remember that day, it was around afternoon, जो वो stage में एक side में he sat, and we all sat on the ground of the stage, and he started telling his story. So when he shared his story that unko bhi, life mein he wanted to become an Air Force pilot. And then unfortunately he couldn't become an Air Force pilot. And then, he was so devastated, and he went to Himalayas, he transformed his life, and how he has become, he has earned his popularity, how he has been successful in his life, मैंने खुद उनके मुंह से मैंने वो सुना कि what life is. And then उन्होंने हमें सबको एक रिसाइट करने के लिए बोला. He asked us to recite along with him. That is, dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results into action. So ये जो lines है ना, that became a Bible in my life, because believe me, जब मैं स्टेज से नीचे आई, उसके बाद आई सेड हे, मैं सिर्फ कमालिका नहीं हूँ जो डॉक्टर नहीं बन पाया. देयर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड जो who has become so successful. They also had their aim in life, but वो नहीं बन पाया, but they have taken the other route to become successful in their life. So it was Dr. APJ Abdul Kalam who really, brought, I would say, that positive energies in my life. And I said that आज से मैं पीछे नहीं देखूंगी, I will move forward with this. And that was my journey that I started off. So
I wanted to become a doctor. I couldn't become a doctor. I wanted to serve the people. I wanted to serve the, our society, but I couldn't. So then I thought this was one option in HR, which is like, being a doctor, you are physically logo ko treat karte hai. But being an HR, you are mentally with the people. You are taking care of your employees. You are the very, I would say, mother of the organization, where you will have to take care of the employer and the employee. So then I found, okay, मैं physically लोगों को treat नहीं कर पाया, but now I can take care of the holistic development of the employees. And this is what the HR for me is all about. So coming to a question about HR diversity and inclusion. So for me, diversity is not about only, we have different people in our society. We have people from differently able from the section. We have people from LGBTQ. We have people like we have gender. We have to increase our gender ratio. Like जैसे मैंने introduction में बताया, I have worked for a company where people लोगों को ये ट्रस्ट नहीं था कि मी बीइंग अ वुमन मैं वो रोल हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, so those kind of things is for me diversity. So I will not use diversity and inclusion, rather I would say it is inclusion and diversity. So I hope I could answer to a question what HR is, what diversity and inclusion is all about. And with this I would also like to say probably retail industry, because basically इससे पहले मैंने retail industry में मैंने काम किया है. And जब हमने first retail, because generally जो people from differently able होता है, they're always given a role of back end operations या office बैठने का, because people doesn't have that. It is very tough to convince, like as a recruiter, management has a vision कि we have to have more diversified people. But trust me, as a recruiter, because people, managers always wanted that they need to have the talented people in their team. So when we say, obviously there is some mindset that this person from a differently able, to be very honest with you, but there are a lot of examples like John Hopkins is an admiration from me. The way he has transformed his life being differently able. So in that way, there are examples, but still people हमारी society में लोग अभी भी सोचते हैं कि कैसे होगा, will they be able to match to our culture, will they be able to deliver the work. But उस time पे HR plays a very important role. मैंने जो role play किया था was to really convince the, I was being a mediator. We had a people from this section of the society, we had the management, but उनको वो convince करना, taking them into your confidence and then hiring those people is something what is the role of HR is all about. So this is what probably, Hemlata, I could answer to your question. What is HR from my own story? What is diversity and inclusion? I hope I could answer to your question. वाह दैट्स ग्रेट मैम, यू हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट. और आई होप हमारी ऑडियंस को एग्जैक्टली आइडिया हो गया है. और आज के बाद मतलब जिन्हें नहीं भी पता होगा दे विल नो दैट व्हाट इज एचआर, व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज इंक्लूजन, एंड यू हैव एक्सप्लेन विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आल्सो. एंड सबसे अच्छी बात मुझे आपकी जो अब्दुल कलाम जी वाली लगी वो बहुत अच्छी लगी, दैट क्योंकि किसी के वर्ड सुनकर खुद को चेंज करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई इस चीज़ को कर नहीं पाता. एंड यू हैव मेड फ्रॉम इट, क्योंकि अपने सपने को छोड़कर फिर किसी अनदर फील्ड में जाना इट्स नॉट अ इजी टास्क. उसे कहना आसान होता है लेकिन उसे एक्चुअल में करना इट्स रियली अ टफ टास्क. एंड आई होप मतलब आपने उस फेस को बाहर निकाल कर आप अपने को नए दायरे में रखा और वहाँ पे भी आपने अपना 100% दिया. दैट इज़ द गुड थिंग. एंड सो मैम हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. सो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. जो हमने कहा कि हमने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को समझ लिया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अब बात हो गई कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, लेकिन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एनी वर्क प्लेस, या ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या किसी भी वर्क प्लेस में बात करें तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है. सो प्लीज़ टेल अस. So it is a very important thing, right?
Like just say, Mamta, today I'm very happy, like you being a woman, you are hosting the session. Vidushi, someone like who's taking care of the technicality, right? So it is a women power, and I'm really happy for it. And then of course Mamta, who was who is actually in fact leading the session in terms of organizing it. It's all women power, right? But हमारी सोसाइटी में जैसे मैंने बोला, like I have worked for companies जहाँ पे it was all women, like 80% of the workforce were women, whereas I have worked for a company where 90% of the workforce were male. And जब मेरे मैनेजर ने जब मुझे हायर किया था, एक्चुअली ही हैड टू चैलेंज इट कि नहीं, ये जो रोल है एक वुमेन कर सकती है, एंड ही टुक इट. एंड देन बेसिस माय परफॉर्मेंस, बेसिस माय कमिटमेंट, जब हमारी सेम पोजीशन के लिए दूसरी रीजन पे जब हायरिंग हुआ, and then along with me there were other two women who were hired for different region, right? And everyone did really well. So मेरा मतलब ये है, like it is, everything is on merit, right? You cannot say that because I'm a woman, or I'm a differently able person, or I come from a LGBTQ community, so therefore I will not be able to perform. No, it is not that. ये हर चीज जो होते हैं, इट इज ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में होते हैं, इट इज ऑन मेरिट पे होते हैं. सो देयरफॉर आई ऑलवेज कीप ऑन एम्फसाइजिंग दिस, दैट हे, आज आई डू नॉट वांट पीपल कि मुझे एम्पथाइज करे कि कमालिका यू आर अ वुमन, सो यू कैन. आई डोंट वांट दैट. मुझे ये, आई वांट टू हियर, मैं लोगों से ये चुनना चाहती हूँ, कमालिका यू हैव गॉट दिस टैलेंट, यू नो Hemlata, you have got this talent. I don't want to hear from people ki Hemlata, you are a woman, so you should do it. No, Hemlata, you will have to do it because you have the talent. So this is what we will have to change the mindset. And in fact, Hemlata, आजकल की लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स दे आर फोकसिंग कि along with जो ये हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं ऑन ऑन डाइवर्सिटी, ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशंस. इनफैक्ट आजकल ये मैंडेट हो गया है कि इवन अ मेल कोलीग विल आल्सो हैव टू अटेंड दोस काइंड ऑफ प्रोग्राम. जब हमारी पॉश के कोई सेशन होते हैं ऑफिस में, इट इज अ मैंडेट फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू अटेंड दो सेशंस, राइट? इट इज नॉट ओनली फॉर वुमेन. The second point that I'm trying to tell you, that I want to emphasize is, like when you have people from different background, when you have people from diversified experience, automatically that वो ना एक organizations को with different ideas, वो एक organizations को grow करने में काफी काफी help करते हैं. Okay, so therefore this is what for me inclusion and diversity is all about. Again, I will say, it is not, don't empathize ki मैं, I am a woman, or I come from from a differently able. No, ऐसा कुछ भी नहीं है. Everything has to be married. The only point is, don't take us away that because we are a woman, or we are from a different section of the society. Please don't underestimate us. So this is what about diversity and inclusion. It is about the mindset, making the organization understand what is the importance, that everyone, that everything works on merit. And therefore these days आजकल बहुत सारी organizations हैं जो male managers को train करते हैं, कि because it's a mindset, you will have to change the mindset. और मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, being a working mother, being a working daughter, being a working wife, a working professional, कि कंपनीज जितना भी पॉलिसीज बनाए, कि जितना भी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम. अगर आपके घर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू फोकस एट वर्क, राइट? सो इसीलिए मैं, लाइक एज अ नाउ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई मेंटोर लॉट ऑफ वुमेन जो करियर ब्रेक ले रहे हैं, either because of the childbirth or many other reasons, and they wanted to come back to the corporate, पर उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है वापस आने के लिए, because they have got some break in their CV. But वैसे lot of जैसे women है, they approach me and I voluntarily counsel them, I try to motivate them. तब मैं बोलती हूँ, if you will have to focus
focus, आपको please ensure that you have a very strong support, because that is the root cause, that is the foundation. अगर आपका वो foundation ठीक नहीं होगा, then whatever you focus, then आप job में आप focus नहीं कर पाओगे, because at the back of the mind ये रहेगा कि मेरे बच्चे को स्कूल से कौन लेके आएगा, मेरे बच्चे को स्कूल में कौन ड्रॉप करेगा, मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, राइट? सो you need to have that support up. Everyone needs motivation in life. Everyone, you need motivation in life, I need motivation in life. अगर अगर हमें घर में बोलेगा, अरे इतना देर से तुम आई हो बट पता नहीं छोटी बच्ची है क्या होगा, do you feel, you will feel happy, right? So you need to have that support at home. And then it is when you have that support and you have those kind of, like employee friendly policies, that is really very very important, which is what diversity inclusion, I feel, is all about in an organization. वाओ! रियली मैम, यू सेड राइट एंड आई रियली गो फॉर इट कि मतलब मैं आपकी हर बात पे सहमत करती हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ अपने आप से ही होती है, शुरुआत अपने आप से ही होती है क्योंकि अगर हम ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, तो पहले तो हम खुद ही नहीं बढ़ पाएँगे और फिर उसके बाद जो हमारी सराउंडिंग है, उसका सपोर्ट भी हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए अगर कॉर्पोरेट में भी अगर हम कहीं काम भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर फैमिली में वो सपोर्ट नहीं है, तो दैट विल क्रिएट सम डिस्टर्बेंस ऑल्सो, है ना? सो ये बात बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट है अगर ये बात फैमिलीज़ में हर एक इंडिविजुअल समझ जाए। हम एक क्वेश्चन पे अभी आएँगे आगे और उससे पहले मैम कि अब हमने जान लिया इम्पोर्टेंस जान ली, डाइवर्सिटी जान ली, अब लेकिन व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन अगर वर्क प्लेसेस में उसे देखा जाए, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब बेनिफिट जैसे मैंने बताया, जब आप when you have different people, from different background, so everyone comes with talent, like merit. I would say merit. When people on merit are there, then what different ideas will come together, and and that will help the organization to grow. So therefore, जैसे लोग बोलते हैं, you need to have like in an organization हमें different experience के लोगों चाहिए, right? We need different experienced employees. तो जब हमारी diversified employees होंगे, there'll be different culture, एक different culture होगा organizations में, एक then employees will focus on more towards, because every employees have got different needs, सबका needs अलग अलग होते हैं. Then organization will try to think how कैसे हम एक employee friendly policy बनाएं. Then employees will come up with different ideas on the table. तो ये सारे चीजें, when you have people from different background, the only thing is like एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएंगे, एक वन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर पाएंगे. सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इट. मैम रियली सेड वेल एंड ये क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर किसी को इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, हर कोई इस पे वो कर सकता है। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि आपके हिसाब से या फिर एक इंडिविजुअल की अगर हम कहें क्योंकि हम ये बात पे आने वाले थे, सो नाउ आई वांट टू आस्क दैट कि एक इंडिविजुअल की व्हाट कैन अ इंडिविजुअल डू टू कंट्रीब्यूट इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन? तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और एक इंडिविजुअल उस पे कंट्रीब्यूट करता है, उससे क्या एक फ़ायदा होता है? प्लीज़ मैम। See, it is again, when जब मैं कुछ contribute करना, like I want to contribute for something, right? So I will not think, मैं नहीं सोचूंगी कि मैं woman हूँ, so मेरा contribution क्या होगा. So my mindset is कि मेरा contribution ऐसा होना चाहिए कि everyone, सबको उसका benefit मिले, right? So मैं आई विल नॉट थिंक ऑफ माई बेनिफिट फर्स्ट, बट मैं सोचूंगी मेरे ऑर्गेनाइजेशंस का क्या बेनिफिट होगा विथ माई कॉन्ट्रीब्यूशन. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग्स, सो द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, that is a very important thing. अगर आप कोई भी, if you're not loving your job, then you cannot do anything, आप जितना भी करो. So therefore you will start loving your job जब there is a sense of belongingness, to the organization. So that is a very important thing for for it. um, the second thing that I would like to tell, मैं ये कहना चाहती हूँ कि again, for a contribution, like organization को ये बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए कि
the job description, the job role should be very clear, right? जब मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, मेरे काम से क्या आउटपुट है, so that should be very clear. तब मैं भी बहुत फोकस रहूंगी. I will be also very clear कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे से क्या चाहते हैं, right? So I will be able to focus it. अगर वो क्लियर नहीं रहेगा कि what the organization is expecting out of me, so I will get confused, I will get demotivated, right? So therefore मेरे job profile clear रहना is very very important. Okay, the third thing that मैं ये कहना चाहती हूँ is the mindset, you know. And for that mindset ये बहुत ज़रूरी है कि every employee should remain motivated, right? Every employee अगर motivation नहीं रहेगा तो it is very difficult to work, right? That is the third thing. The fourth thing मैं ये कहना चाहती हूँ is the organization. So the culture of the organization. So एक organization को ऐसा culture create करना है कि कल को to raise some my voice, I should not be scared of it. Okay, I should have that confidence that I can speak, I can raise my voice, and the organization is going to listen to me. You know, the organization has such a got beautiful culture that, you know, I love going to office every day. You know, I don't think that thank God, hey, aaj Friday hai. Like morning when I get up, I feel, hey, it's Monday, let me go to office. You know, so those are the important things I feel, which is very important, be it related to the topic of inclusion or diversity, or be it to the topic of employee motivation and productivity. वाओ मैम, रियली मैम इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और दूसरा एक बहुत अच्छा इफेक्ट होगा कि अगर एक हर एक इंडिविजुअल अगर इस चीज़ को सोचना शुरू कर दे कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं देना, तो उससे एक और चीज़ होगी कि हमारी फैमिली में या हमारी वर्क एरियाज में, वर्क प्लेसेस में एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एवरीवन विल बी पॉजिटिव। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चीज़ें चल रही होंगी तो दे विल मैनेज इट, बिकॉज़ उन्हें पता है कि हमारी स्थिति को या हमारे इस कंडीशन को समझा जा रहा है ना? जैसे कि कोई डिसेबल पर्सन है, तो अगर हम उसे एज़ एन बूस्ट अप करते हैं, नो यू आर टू गुड इन योर वर्क, अगर हम उसके वर्क को देखें, उसकी डिसेबिलिटी को ना देखें, तो वी विल गिव हिम अपॉर्च्युनिटी कि वो आगे बढ़े, है ना? अब कई जगह पे सेक्सुअलिटी को भी लेकर कई सारे इश्यूज़ होते हैं, है ना? सो उस चीज़ के लिए भी हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। गर्ल्स एजुकेशन मतलब गर्ल्स मतलब दिखने को लेकर कोई किस तरीके से दिखता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है एंड दे आर सो एक्साइटेड, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं आपके लिए। सो उनमें से हम आई विल पिक वन ऑफ फॉर यू दैट what role does education and training play in fostering a diverse and inclusive workplace? See, education is the utmost thing. You know, without education, you will not broaden your mindset. You will not broaden your thoughts. So it is the education which is a gateway that will take anyone, you know, to for the next step. So मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि what got me here won't get me there, you know, and that is really the education. With education, with training and development, मेरे जो skills and competences है that will grow. So and you know, it is always says an individual is a lifetime learner, right? I might be a successful, you know, a student, but I may not be a successful employee, right? I may not be a successful student, but I am a successful employee. So everything depends on the perseverance of the employee, of an individual. Everything depends how motivated that the person is, because मुझे ये होना चाहिए कि you know, every day is a learning day for me, and I learn with experiences every day. So therefore the role of education is very clear. Without education it is not possible to move ahead. That coming to at a workplace, training and development is very important, because when you will have to grow up in your life, you will also have to, you know, enhance your skills and competences. So those skills and competences will come from training. And also I always keep on focusing, because I as an individual, you know, I love reading books. You know, for me, I always say, like, books are my best friends. So therefore it is not only, if you have to really enhance your skills and competences, you have to grow in your life, you have to grow in your career, I think you will have to pick up
different things, be it training and development, be it reading books, be it networking, going to different forums, networking, understanding what is happening around, like attending such kind of sessions where you're hearing from different speakers or from different experienced individual. I think those are, some of the, I would say, buckets of where an individual can really grow and, bring success in his or her life. थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग। और ये रियली आपने बहुत सही कहा कि अपने आप को मोटिवेट रखना किसी भी तरीके से, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद हर कोई अपने आप को सोचने लग जाता है कि मैं इतना काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। सो आपकी एक हैबिट है कि रियल में रीडिंग बुक इज़ रियली अ गुड थिंग, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं नॉलेजेबल भी बनाती है, साथ ही साथ आपको कई सारी चीज़ें सिखाती है। और इसके साथ-साथ जो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली भी करती हूँ, मोटिवेटेड वीडियो या मोटिवेटिंग आप कुछ पढ़ सकते हैं, जो आपको लाइफ में, क्योंकि कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा मोटिवेट होते हो, दे ब्रिंग्स यू थ्रू योर नेक्स्ट स्टेप, कि आपके अगर कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो आप उससे निकल कर बाहर आते हो, है ना? सो दैट मेक्स यू डिफरेंस। एंड थैंक यू सो मच मैम। और आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है, उन्होंने आपने जो भी यहाँ पे सजेशंस दिए, उन्हें वो अच्छे से सुनेंगे, और अपनी लाइफ में भी अगर वो कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, तो वो उन्हें सुनेंगे और करेंगे, राइट? सो मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से ही है, हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड? So, if an organization has to ensure, the first is the organization needs to have the culture, where, as I said, I will again repeat the same thing. The first is the culture where the organization creates an inclusive culture in the organization. Okay, that is point number one. The point number two, the organization will really have to, ensure that. That they doesn't have those mindset where they feel that there are some division of employees in the organization. So that mindset can be created through different policies, different training programs, different session, and all this stuff. So therefore these are the 2 points: the culture, the policies, that can really help an organization to create that mindset of it. Right, ma'am. The culture and policy really depends, and you'd say that they ensure that they doesn't have the mindset. जैसे कि आपकी बात एक बहुत, मैं कह रही हूँ कि आप फोकस कर रहे हैं, that is the mindset. एंड यू रियली वेल सेड दैट माइंडसेट, अगर माइंडसेट ही सब कुछ है देखा जाए तो, क्योंकि अगर हर इंसान अपने माइंडसेट को समझ ले, उसे उस तरीके से डिज़ाइन कर ले, उसको मोटिवेट रखने के लिए उस तरीके के काम करे, तो वो अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकता है, वो उस चीज़ों से बाहर आ सकता है, राइट? So सो this मैम, reminds me. So this reminds me with there's a very famous book by Viktor Frankl. A Man's Search for Meaning. So it's a very motivating book. It's a very famous book, Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. So वहाँ पर Viktor Frankl ने example दिया था, and that I always keep that, and I agree with that. जब एक gas, when a gas has to fill the chamber, then it doesn't mean what is the quantity of the gas, right? A small quantity of gas can also fill the chamber, right? Then that same applies to human being also. Your mind is everything. Your mind controls everything. So if you have to if you have to think of sadness, it'll fill your body, and then entire you will feel sad. So when you feel happy, when you think of happiness thing, that will, your body will flow, and that is how, it'll. So everything is on the mind. Your mind controls your life. Your mind controls an individual. So therefore it is the mind that everyone has to take care of it. It is your thoughts. Your mind and thoughts has to be taken care of it. रियली मैम, एंड मैं पर्सनली आपके इन वर्ड्स को लूँगी, बिकॉज यू रियली सेड वेल, एंड आई होप आई विल, क्योंकि मुझे भी बुक्स पढ़ने का शौक है, एंड आई विल गो फॉर दैट बुक एंड रियली रीड इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़, योर सजेशंस, योर knowledge about the diversity and inclusion, right? So ma'am, the last question I would like to ask you, that are there any laws and regulations related to diversity and inclusion in workplaces?
Yes, of course. There are a lot of rules and regulations. One such, the very foremost thing that it is very strict is about the Posh Act. It is very important for an organization that they need to implement the Posh policy in the organization. In that act, it is important that you train your employees. As per the requirement, it is very important that there should be a committee for it to readdress those kind of complaints. It's a necessary for the organization to file the annual Posh reports. So there are different rules and regulations, and I hope these days there are companies where that they're talking about the certain representation of women in the leadership position, especially in the boards. So those kind of rules and regulations which are coming in. But again, there are some variation organization to organization. Like I said, I have worked for an organization where the 80% of the workforce were women, because that was a requirement, that was something all about. Then I have worked for an organization where the 80% of the workforce were male, because there were some kind of roles where that has to be done. So it varies from organization to organization, but keeping the strict things, as I said, about Posh, the representation of women in the board, in the leadership position. So those kind of mandates which has been implemented in various countries across the globe. थैंक यू मैम। सो मैम उन रेगुलेशंस को मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है? Of course, of course. राइट। Agar wo, if there is a Posh complaint, there are mandates that a Posh complaint has to be addressed within 90 days. So there are those kind of rules and regulations. And if the companies have not addressed those things, then an employee is can approach the law for it, and that organization will be in big trouble. Same applies, as I said, if agar aapka koi if you don't have an internal compliance committee for this, then organization will have to pay a penalty of up to rupees 50,000. So there are rules and regulations where an organization has to strictly follow for it. दैट्स ग्रेट मैम, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो कई सारी जगह उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, और वो होगा तो लोग उसके ऊपर अगर नहीं भी करना चाहते हैं तब भी वो उसके ऊपर काम करेंगे, राइट? सो मैम The policy should not be misused, because from my experience, I have seen a lot of misuse of this policy. Okay, so therefore, it is very important, and I feel HR plays a very important role in sensitizing of those kind of policies. And also, equally, it is a top management role in the organization. How do you sensitize your employees for such kind of initiative, for such kind of policies? रियली मैम, रियली वेल सेड। और मैम हमारी ऑडियंस में एक क्वेश्चन और हम रिसीव करेंगे जो हमारी ऑडियंस की तरफ से आया है। आर देयर रिस्ट्रिक्शंस फॉर गर्ल इन योर स्टेट टू? प्लीज टेल मैम। No, Assam is one state where we don't have any restrictions. To be very honest, I I don't have brother. I have sister, and today my sister is doing really well. I never felt from my parents that I'm a child, I am a girl child, or I'm a daughter. I never felt that. Same thing. But later when I keep hearing from people that women are not being empowered, women are not getting, I was like, what is this? I never felt about it, because my parents never discriminated me, or my family never discriminated me, because, or being in Assamese society, people never discriminated me that I'm a woman. But later, when I gradually got into the corporate world, when I saw certain things, that never happened to me. But in some, again, I said that was a culture of the organization. That was the industry was like that. That it was like they didn't have that confidence on women. There many a times it says that, hey, you keep quiet, you can't do this. But that I said, no, it is a challenge for me. I will have to change the mindset through my work. So it is not about that I will go and tell people, "Ki, I'm a woman, give me this opportunity." It is not that. I will tell people that I have got the talent, so give me the opportunity. It has to be that. रियली मैम, क्योंकि लाइफ में हमें अगर कभी ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी, हमारे ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना कैरियर शुरू करेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग आपने यहाँ पे दी है कि अपनी लाइफ में अगर कभी भी कोई आपके लिए कुछ कहता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, तो नेवर टेक इट
other ways. You take it like a challenge in your life that, wait, I will show you by my work, right? So मैं अपने काम से आपको दिखाऊंगी. So let me share my story. When you're saying that to Nice. motivate the girls, जैसे मैंने बताया कि I wanted to become a doctor in my life और मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, उसी टाइम पे when I was doing my graduation, जब मैं graduation कर रही थी, so उस टाइम पे, my dad had certain, issues, and he had some financial crisis that point in time. And then what happened, like, there were some, relatives who thought that, मैं लड़की हूँ, मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, जस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कि why I'm wasting my dad's money. Or my sister was very intelligent, she really excelled in her academics, so उनको लगा कि, whatever, it be, let this, then they found a, match for me, and they said that let her get married, and then, she can be a good housewife, her husband would be earning well, and then why should she waste her money, father's money, in education. Okay, so us time pe, then my parents, because probably they both are well educated, and that is where the education comes in, and they, because education thoughts change their thought process, and they told me that, Kamalika, um, don't get disheartened if the society is telling you that you are not capable of, if they feel that you can be good for housewife. No, your hard work will pay you off. And जैसे मैंने बताया, Dr. Abdul Kalam, thoughts really changed my life. And when those kind of obstacles came in my life, when people thought that, I'm good for nothing, and I should get married at the age of probably 18 years, yeah, 18, 19 years, graduation, right? 18, 19 years, then I should get married and, settle down in my life. But overcoming those of challenges is like, always remember what I used to remember what my parents told me, that your hard work will pay you off. Don't cry over the spilt milk. मेरे डैड का एक बहुत हमेशा, जब भी मैं एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स नहीं लाती थी, और जब भी था, मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. You have missed the first bus, but don't try to not to miss the second bus. ये मेरे डैड हमेशा हमें, मेरे और मेरे बहन को हमेशा बोलते थे. So therefore, होता है लाइफ में, देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बट एज आई सेड, इफ यू हैव मिस, अगर आपने फर्स्ट बस मिस कर लिया है, प्लीज एंश्योर दैट आप सेकंड बस को मिस ना करें. उसके लिए वो आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा. आपको, यू विल हैव टू बी रियली अ स्मार्ट, इन योर थॉट प्रोसेस. यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्क. स्मार्ट एंड हार्ड वर्क वर्क्स टुगेदर, एंड देन you will obviously, you will excel in your life. This is what I can share from my own personal story. वाह, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो लर्निंग दे के चला जाता है ना, वो बाकी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दे पाती. एंड यू रियली वेल सेड, और हमारी ऑडियंस ने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा, और आपके फादर जो लर्निंग दे रहे हैं, एंड आई होप वो मुझे भी एक सीखने को मिला है, क्योंकि ना वो, ये सही है कि एक बस छूट गई है तो दूसरी बस हमें पकड़ लेनी चाहिए, राइट? सो मैम, इन लास्ट, क्योंकि आज का कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत ही अच्छा रहा, पर इन लास्ट हमारी ऑडियंस और हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ मैम। First of all, thank you, Amrita Devi Foundation, Govind, because I'm also an HR professional, and Govind also an HR professional. That's how I got to know from the HR network about Govind. I think this is a noble cause. I really hats off to Govind and his team and all of you. I know Mamta, I know you, Hemlata now, I know Vidushi. I think it is very motivating. Like, in spite of your regular work, that you're devoting your time for this novel cause. And as I said, being a woman, that is something in my blood boils actually. अगर कोई बोलता है कि women cannot do it, और कोई बोलता है कि you are a woman, be away from it. So my blood boils for it, because as I said, everything is on merit. I don't want people to give me an opportunity because I'm a woman. I want people to give me an opportunity because I have got the talent, right? So this is such a noble cause that, you are focusing on girls' education, and trying to, work for their employment, trying to empower them. I think nothing can be a great for it. So once again, congratulations to Govind, Mamta, Hemlata, Vidushi, and other, team members. I think it is very inspiring for everyone, and you should keep doing such good work. And do let me know whenever I can support you. I'll be there to always support you. Thank you.
Thanks a lot, ma'am. Thanks for your wonderful message. And we really happy कि आज आपकी आपके साथ जो कन्वर्सेशन हमारा चला, हमने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत अच्छा लगा आपसे, पता ही नहीं चला कि ये 1 आवर हमारा कब निकल गया एंड रियली मन कर रहा है कि आपसे बात करते ही रहे। एंड सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल मोटिवेशन, वंडरफुल स्पीक, वंडरफुल नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर लाइफ journey. We all are happy to see that and हमारी ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा एंड स्पेशली जो हमारा टॉपिक था आज का डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, उससे बहुत कुछ लर्न किया होगा, है ना। और एग्जैक्टली उस टॉपिक के बारे में उन्हें पूरी अवेयरनेस भी हो गई होगी। सो इन लास्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अमृता देवी फाउंडेशन जिस काम के लिए कर रही है, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, हम एज एन उत्तराखंड के वासी होकर उनका सहयोग कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, थोड़ा थोड़ा भी साथ देंगे, तो जो उनका विज़न है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, वो एक बड़ा विज़न लेकर आए हैं और उसे हमें पूरा करना है। तो हम सब जब साथ देंगे तो वो पूरा होगा। सो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट लेट्स बिल्ड उत्तराखंड टुगेदर। एंड इसी के साथ मैं अपनी सारी ऑडियंस के लिए, सारे आज हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए एंड स्पेशली कमालिका जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। बहुत तहे तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको कि अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम यू। एंड इन लास्ट सभी के लिए सब हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें। फॉर दैट आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करेंगे और अगले संडे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।